and all it is to be used. Okay, okay. So, sir, the class will be in Hindi. Hindi is okay, na, sir? Anil ji? हिंदी में मैं ट्राई करेगा, मुझे उतना हिंदी आता नहीं है। ट्राई। Okay, okay, okay. Fine. So we will manage, both a या little bit English, little bit Hindi and all. या लिटिल Okay. बिट हिंदी इंग्लिश, इसमें Yeah, मैनेज yeah, करेंगे। yeah. No, no issue, no issue. The whole idea is ever since the COVID started, we wanted to have some, daily session because everyone was confined to their, houses. So ओके then we started this kind of session, for spiritual culture, ओके that Bhagavatam classes, Bhagavad Gita classes, and all. So since last 4 or 5 years, we have been regularly doing it. या So on daily basis, we have speakers from all over, many monks and all. They also share some spiritual topics. But once in a month, because of Yogra ji, या he gives a class on, medical health care and all. So ओके that is also beneficial because all the many of them are senior citizens. या So these senior citizens also need some help ओके regarding various health issues. So they have done many health issues for a heart attack and acupuncture and diet restrictions and diet things. Many lectures we have done. So probably every month we have one session from Bhaktivinoda Hospital. हम्म। So usually people start joining in after four, between 4, 5 and 4, 10 people, come more and more. ओके So uh, so we'll wait for another 5 minutes. ओके। So रत्नावली माता जी, आपको कुछ पूछना है गर्मी को लेके? आज हमारे साथ डॉक्टर अनिल जी आए हैं भक्तिवेदांत अस्पताल से। अमल अच्छा। गौरी, हरे अतुल जी, आप लोग को कुछ हरे पूछना कृष्णा। है? हमारा चंदा जी। हमारा हमारा गांव वाला ही है। मलयालम। ओके हाँ, मलेरिया। ओके, ओके। ठीक है, हरे कृष्ण। चलिए। आप हरे लोग का कृष्णा हरे अपना अपना लैंग्वेज में कुछ पूछ सकते हैं जो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। कृष्णा। Okay. So I think you can start slowly and gradually briefing out Dr. Anji so that those who या are on time, they should take a benefit of it. You can speak. Yogra ji, you want to introduce? Yeah, I'll do that. Please, you start, please, bro. Okay. Hare Krishna. हरे कृष्णा। Hare Krishna. So, बहुत बहुत धन्यवाद हरि बोल आनंद प्रभु, आपसे दोबारा एक बार जुड़ने का मौका मिल रहा है। आपके साथ हमारे तमाम इस्कॉन वसई कांग्रेगेशन के भक्तों को मेरा सादर पूर्वक प्रणाम। आज के इस विशेष वेबिनार सत्र बीट द हीट आयुर्वेदा वेलनेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह सत्र वैद्य रत्नम गोवर्धन आयुर्वेदा हॉस्पिटल एवं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट मीरा रोड मुंबई में स्थित 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी NABH मान्यता प्राप्त टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। यहाँ हम शरीर, मन एवं आत्मा का समग्र स्वास्थ्य हेतु एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती है। हमें बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि फरवरी 2026 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित फीकी एडवांटेज हेल्थकेयर समिट में वैद्य रत्नम गोवर्धन आयुर्वेदा हॉस्पिटल को बेस्ट वेलनेस सेंटर ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वैद्य रत्नम गोवर्धन आयुर्वेदा हॉस्पिटल, जो कि गोवर्धन इको विलेज के नाम से जाना जाता है, वाड़ा पालघर डिस्ट्रिक्ट में, वो एक शांत एवं प्राकृतिक वातावरण में स्थित एक विशिष्ट आयुर्वेदिक अस्पताल है जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एवं केरला की 150 वर्षों से अधिक पुरानी प्रसिद्ध वैद्य रत्नम आयुर्वेदा परंपरा का संयुक्त उपक्रम है। यहाँ पारंपरिक केरल आयुर्वेद, पंचकर्मा, डिटॉक्सिफिकेशन, रीजेन्युएशन एवं प्रिवेंटिव वेलनेस उपचार आध्यात्मिक वातावरण में प्रदान किए जाते हैं। साथ ही वैद्य रत्नम गोवर्धन आयुर्वेदा हॉस्पिटल में बीट द हीट विशेष आयुर्वेद वेलनेस अभियान 3 जून तक चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सभी आयुर्वेद सेवाओं पे 20% की छूट है। वीडियो कंसल्टेशन पर 50% की छूट उपलब्ध है। सर, आप अगले स्लाइड में जाओगे तो वो रिप्रेजेंटेशन उसमें रहेगा। यस।
तो जैसे कि मैंने कहा था, वैद्य रत्नम गोवर्धन आयुर्वेदा हॉस्पिटल, जो कि जीवी गोवर्धन इको विलेज वाड़ा में स्थित है, बीट द हीट विशेष आयुर्वेदा वेलनेस अभियान 30 जून तक चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत सभी आयुर्वेद सेवाओं पर 20% छूट एवं वीडियो कंसल्टेशन पर 50% छूट उपलब्ध है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन पर्सन हरिबोलानंद प्रभु, मैं आपके साथ ये डिटेल्स शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ताकि आप अपने भक्तों के साथ वो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जी। आज के हमारे वक्ता है डॉक्टर अनिल कैमल, कंसल्टेंट एमडी आयुर्वेदा वाचस्पति एवं सीएमओ, जिसे हम चीफ मेडिकल ऑफिसर एट वैद्य रत्नम गोवर्धन आयुर्वेदा हॉस्पिटल वाड़ा, जिला पालघर में है। डॉक्टर अनिल कैमल आयुर्वेद क्षेत्र के अनुभवी चिकित्सक है, जिनके पास लगभग 30 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। वे विशेष रूप से पंचकर्म, आयुर्वेदिक जीवन शैली, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं समग्र स्वास्थ्य संतुलन पर कार्यरत है, तथा आयुर्वेद के माध्यम से प्राकृतिक एवं संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयासरत है। आप सभी का इस वेलनेस सत्र में सहभागी बनने के हेतु बहुत हार्दिक स्वागत है। आशा है कि यह वेबिनार आपको गर्मियों में स्वास्थ्य एवं संतुलित रहने हेतु आयुर्वेद के उपायों की उपयोगी जानकारी प्रदान करेगा। So without further delay, I request Dr. Anil Kamal sir to proceed with this session. Thank you. Hare Krishna. So thank you, Yogaraj ji, for the great introduction. So I am not that much fluent on Hindi. हिंदी में उतना उतना से बात करने को नहीं आता है, तो वे मैं विल बी ट्राई विथ हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा बात करेंगे। इसमें आज अभी हम सभी साल से देखेगा तो ये साल में हमारा गर्मी बहुत ज़्यादा है। गया साल वगैरह ऐसा कंपेयर किया जाए तो ये साल में बहुत गर्मी ज़्यादा है और आदमी लोग को ज़्यादा ऐसा नुकसान भी होता है। तो उसके वजह से हम सोचा था ऐसा एक हीट द बीट प्रोग्राम ऐसा करके थोड़ा ऐसा अवेयरनेस भी करो, और थोड़ा ट्रीटमेंट भी ऐसा आयुर्वेदिक में अच्छा अच्छा सा ट्रीटमेंट भी है, थोड़ा ऐसा लाइफस्टाइल करेक्शन है, ऐसा ऐसा आदमी लोगों को ऐसा देने का ऐसा सोचने के हिसाब हिसाब में हम एक किया था, ऐसा बीट द हीट प्रोग्राम किया था। इसमें दैट इसमें समर में देखे तो ये समर में हीट ज़्यादा है, और अभी हीट के वजह से डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा है, फैटिक ज़्यादा है। ऐसा ट्रैवलिंग करने वाला ऐसा ट्रैवलिंग करने के हिसाब से ऐसा पानी पीने का बहुत कम करता है, उसके वजह से ऐसा स्किन का कंप्लेन होने का चांसेस ज़्यादा है। और ड्यू टू दैट वाटर का कमी रहने के वजह से ऐसा ब्लड का भी ऐसा गर्मी ज़्यादा बढ़ने के वजह से उसका इरिटेबिलिटी, बॉडी में भी इरिटेबिलिटी होता है, स्किन में इरिटेबिलिटी होता है, एनर्जी लेवल को कम होने का तरीका होता है। ये सब ऐसा ये हीट हीट के वजह से अभी ज़्यादा होता है। इन आयुर्वेदा में ये इट इज ए टाइम टेस्टेड डाइटरी रेजिमेन इन लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में टाइम टेस्टेड डाइटरी भी बना दैट बताया हुआ है, रेजिमेन भी बना बताया हुआ है। उसके बारे में आज का एक ये भाषण ऐसा करेंगे उसके ऊपर। So, first of all, that we want to just understand the summer according to Ayurveda. आयुर्वेदिक में समर का बारे में देखेगा तो समर को ऐसा ग्रीष्म ऋतु करता है। ऐसा 6 ऋतु से ऐसा इसमें 6 ऋतु में ग्रीष्म ऋतु होता है। एक ग्रीष्म ऋतु में क्या है, ये ऐसा हमारा क्लाइमेट वगैरह सब ऐसा हॉट के ऐसा हॉट ज़्यादा होने के वजह से पित्त और वादा ज़्यादा बढ़ेगा। पित्त और ज़्यादा वात और पित्त ज़्यादा बढ़ने के वजह से वात का ज़्यादा बीमारी अभी समर के बाद ऐसा ये रेनी सीजन में होने का चांसेस है। तो समर कितना अच्छा सा हम ऐसा तरीके में समर को ऐसा हम पालन करता है, और वात का बीमारी कम होने के लिए चांसेस है। तो ज़्यादा ये रेनी सीजन में वात का बीमारी ज़्यादा होता है, बिकॉज ये वात अग्रीवेशन ज़्यादा होता है ये समर सीजन में, बिकॉज ऑफ पित्त का अग्रीवेशन के वजह से। पित्त बोलेगा तो ऐसा हीट, बॉडी हीट के वजह से उसमें एनर्जी और स्टैमिना ग्रेजुअली कम होता है, हीट एक्युमुलेशन बॉडी में होता है, और ड्यू टू पित्ता दैट वादा इज ऑल्सो गेटिंग अग्रीवेटेड।
सो कॉमन ऐसा समर में कॉमन ऐसा डिसीज वगैरह देखेगा तो डिहाइड्रेशन के वजह से ज़्यादा डिसीज होता है। ऐसा पूरा समय ऐसा थ्रोट में थोड़ा ऐसा ड्राई ड्राई कभी भी ऐसा होता ही रहता है। ऐसा पानी पीने का बोलेगा तो ऐसा ज़्यादा पानी एक साथ ऐसा पी के ऐसा ये डिहाइड्रेशन हमको पार नहीं कर सकते। धीरे धीरे ऐसा पानी पीने का ऐसा आदत हम बढ़ाने का है। और हीट एक्सॉशन भी होता है इसमें, और एसिडिटी और गैस का ऐसा इंडाइजेशन वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा है। इसी टाइम को ऐसा खाना में चेंजेस रहेगा, खाना कभी अभी खाना लेगा, कभी भूख लगेगा, कभी नहीं भूख लगेगा, उसके वजह से हमें डिसीज वगैरह ये ऐसा डाइजेशन का इंडाइजेशन का डिसीज होने का चांसेस ज़्यादा है। और एक्सेसिव टेस्ट होता है। और ये पानी के कमी से और हीट बढ़ाने के ब्लड में हीट बढ़ाने के वजह से स्किन रैशेस एलर्जी वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा है। और उसके वजह से वो हीट इन द ब्लड दैट आल्सो क्रिएट्स द इरिटेबिलिटी एंगर दैट थिंग्स एंड ऑल आल्सो कैन बी हैपन बिकॉज ऑफ पित्ता बढ़ाने के लिए बढ़ने के वजह से। और ये पित्त और वादा बढ़ने के वजह से वीकनेस भी होता है, फैटिक होता है। ये सब ऐसा सिम्टम्स हमको ज़्यादा ये समर में होने का होता है। सो वाई सीजनल ईटिंग मैटर्स, वो सीजनल में ये ईटिंग मैटर्स में क्या तरीका करना है वो हम इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। वो ईटिंग मैटर्स अच्छा सा देखेंगे तो बेनिफिट फॉर सीजनल ईटिंग, दैट सीजनल ईटिंग में ओके हमारा आयुर्वेदिक में बोलता है ऐसा ये ऋतु संधि बोलता है। एक ऋतु कौन सा भी ऋतु आने के 15 दिन पहले हम ऐसा वो क्या क्या तरीका हम ऐसा ये रेजिमेंट डेली रेजिमेंट में किया था वो धीरे धीरे कम करके दूसरा ऋतु के लिए प्रवेश करने का। दूसरा प्रवेश वो गया ऋतु में 15 दिन और आगे आने वाला ऋतु में 15 दिन, वो 30 दिन हम ऐसा एक छोड़ के दूसरा लेने का ऐसा तरीका कम करने का, इसके लिए ऋतु संधि बोलता है। ऐसा करेगा तो डिसीज वगैरह सीजनल डिसीज आने का चांसेस बहुत कम ही पड़ेगा। और मेंटेन बॉडी टेम्परेचर naturally is one of the thing we want to follow in the summer season, and improve digestion and metabolism, that is the aim for doing this all activities। एंड सीजनल इलनेस वगैरह होने का चांसेस है वो कम करने के लिए ये प्लान करने का, और इम्यूनिटी और हाइड्रेशन करने के लिए प्लान करना है, और मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस करने के लिए प्लान करने का। वो सीजनल ये सब ऐसा सीजनल डाइट करने के वजह से ये सब ऐसा हमको मिल जाएगा। एंड सीजनल डाइट देखेगा तो summer diet principles we want to follow. Some of the diet principles are there in Ayurveda that we want to follow. So what are the diet principles? Light and easy to digest, इजी टू डाइजेस्ट खाना वगैरह लेना है। इजी टू डाइजेस्ट बोलेगा तो हमारा नॉर्मल खाने के उसमें थोड़ा कमी करके ज़्यादा सा एक लिक्विड जैसा ऐसा ग्रोयल कंजी वगैरह हम बोलता है ना, वो कंजी वगैरह बना के कौन सा तो चीज़ भी कंजी बना के लेगा तो थोड़ा भी हमको हाइड्रेशन भी हो जाएगा, उसमें इजी टू डाइजेस्ट भी हो जाएगा। और कूलिंग इन नेचर, द खाना वगैरह सब ऐसा कूलिंग इन नेचर बोलेगा तो ऐसा ठंडे करके नहीं लेने का, ऐसा नहीं है। खाने का वो जो चीज उसमें यूज करता है वो बॉडी में ठंडी करना है। और हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग, वी वांट टू टेक प्रॉपरली टेक द ड्रिंक्स, वाटर एंड ऑल वी वांट टू प्रॉपरली टेक, एंड दैट वाटर टू बी गेट नरिश्ड इन द बॉडी। एंड फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाने को लेना है। ओके अभी खाना लेके हम ऐसा एक फ्रिज में रखे, और उसके बाद ये ओके 3-4 दिन के लिए एक बार खाना बना के ऐसा फ्रिज में लेके थोड़ा थोड़ा लेके ऐसा रीहीट करके लेने का वो अच्छा नहीं है। और माइल्डली स्वीट बिटर एंड एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वादा एंड पित्ता अग्रीवेशन के वजह से पित्त का अग्रीवेशन कम करने के लिए ये स्वीट थोड़ा थोड़ा लेना पड़ेगा। और बिटर चीज बिटर गार्ड टाइप ऑफ थिंग्स वी वांट टू टेक, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट वगैरह हम लेना लेना अच्छा है। और फूड टू अवॉइड इन एक्सेस मीन्स स्पाइसी फूड्स, स्पाइसी वगैरह ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा ऐसा ये एसिड वगैरह एसिडिटी वगैरह होने का चांसेस है। और ऑयल एंड फ्राइड फूड्स टू बी अवॉइडेड, एंड एक्सेस टी कॉफ़ी लेने का ऐसा आदत है तो वो भी अवॉइड करना है। और कार्बोनेटेड फूड्स स्पेशली दैट पेप्सी टाइप ऑफ कोलास थिंग्स एंड ऑल दैट शुड नॉट बी टेक इन दिस सीजन।
and very salty and sour foods. ज़्यादा salt वाला और sour वाला food वगैरह नहीं लेने का. Processed and packaged food also to be avoided. This is very important to maintain our digestive function properly. And food that naturally cool the body. So that we want to use some of the fruits for food that naturally that can be cool our body. That thing we want to add it in our food habits. So in the fruits, when we are seeing that watermelon, muskmelon, pomegranate, grapes, coconut, sweet lime, mango, in moderation and all, it can be used. Don't take mango and then continuously in any daily usage. And vegetables, cucumber, bottle gourd, ash gourd, pumpkin, ridge gourd, leafy greens are very good for to control your heat in the body. And also this leafy greens and all, it will be control the pitta also in the body. And when we see the dairy, buttermilk is one of the very good food for improve the digestion. And fresh curd also can be taken in this season. And cow's milk is very good for to maintain our the weakness, that dehydration things and all. And homemade lassi also you can take in a daytime manner, not in the night. And grains recommended is rice. It is one of the major thing because rice is cool in nature. Barley also we can take. Wheat to be in moderate condition because wheat also it is cold, but it is that digestive function. It will be better in when we compare to rice. Rice is more good. And oats also we can take. When we take when we compare to that some of the the millets and all, it is also good in this condition. One of the millet called pearl millet. It is mainly available from the Tamil Nadu. It is called as kambu. That is very good for to give coolness in the body, as well as ragi. These both are very cool and it is easy to digest also. That will be good in this season. And these foods provide hydration, minerals, vitamins, and energy while keeping the digestive system light and balanced. So this type of food to be included for our normally naturally cool to your body. And what is the importance of hydration? Drink water at regular intervals. That is to be followed. That is very important. It is not like that morning you are taken 1 liter of water. After 3-4 hours, again 1 liter of water. It is not like that. Sip water slowly instead of drinking large quantities quickly. So then only that water level, it will be maintained in our body. And prefer room temperature or slightly cool water. Cold water, how we can make the cold water? For that, we can put in the clay pots. We can put in the clay pots. That will be that naturally cold thing we will be getting. While putting in the clay pots, you can add that you can put in that clay pots some of these is maybe you may heard about that anandamul, that vetiver that roots are there, that you can clean it and put it in the water, so that also will be give a coolness to the body. And avoid ice cold beverages as they weaken digestion. So ice and ice related things, cold things and all to be avoided in this season. And some of the drinks in the basis of Ayurveda, it is tender coconut water is very good for to maintain that hydration level. And buttermilk with roasted cumin. Coriander water is very good. You can just put the coriander and make to boil it and keep it in the room temperature and take that. And fennel infused water. Panna is also you can take. It is not in a regular take. Once in a while you can take. Then lemon water is good. And lemon water, how we want to prepare the lemon water means, while preparing the lemon water, put the salt in that, not the what is called as the sugar. Instead of sugar, put the salt, because salt and lemon it is added, so automatically that will change to that alkali level. Once it is alkali level, that will be help for the digestive function. So lemon water with the salt lemon water, it is more good. And herbal cooling drinks. Herbal cooling drinks also you can take. That is called as one of the herbal cooling drinks like Shariva. You may heard about the Shariva things and all that. You can put it in the water and make as some of the decoction type
and that can be mixed with a little sugar syrup, and we can mix with the water and take. That is also a good herbal cooling drink. And Ayurvedic herbs for summer wellness, when we see the beat the heat, amla is one of the good herb as well as the vegetable. It is good for to rich in vitamin C, improves immunity, reduces body heat, support digestion. Amla can be used daily basis. Coriander, cooling and detoxifying, helps reduce acidity, improves urinary health also. And fennel seeds, which reduces bloating and heat, refreshes the body, improves digestion. And when you use mint, which cools and refresh, relieves nausea and indigestion. And use of vetiver, that gus, it is a naturally cooling, used in drinks and infused water. That is, just put in that clay pots and keep that water in that pot and take that water, so that automatically that effect of the cooling nature of the vetiver that will be getting to our body. At summer digestive care, when we see that signs of weak digestion, you want to be very much carefully noticed. In that, acidity is one of the things. Frequent acidity can be get. If you are taken food, not taken food, then also the acidity can be get. And bloating will be there. Loss of appetite will be there. उसमें इंडाइजेशन होने का चांसेस है, और लूज मोशन, कभी कभी लूज मोशन होता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी होता है। वो पानी कम होने के वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, ज़्यादा पानी पीने के वजह से लूज मोशन भी होता है, और बर्निंग सेंसेशन भी होने का चांसेस है। वो ये सब ऐसा सिम्टम्स रहेगा तो यू शुड बी सी दैट इट इज़ ए वीक डाइजेशन. फॉर दैट you want to use some of the food tips in to improve the digestion. That is, eat smaller and lighter meals and avoid overeating. According to that Ayurveda, as well as according to Bhagavad Gita also, it is told that is anashanam and adhyashanam. Should not take more food and should not take less food also. Where according to our digestive that fire or the digestive needed, we want to take normal food, that quantity of food to be, we want to maintain. और include fresh fruits and vegetables. Fruits, fresh fruits और vegetables है उसमें ऐड करना है खाने में. और consume meal on time. खाना ऑन टाइम में खाना लेना चाहिए. ऐसा भूख नहीं लगता है, भूख ज़्यादा होता है, उसके वजह से हम कभी कभी ऐसा भूख खाना ऐसा छोड़ता है. ऐसा ये नहीं, अच्छा नहीं है. यू वांट टू टेक लिटिल फूड ऑन टाइम. वंस यू आर टेकिंग दैट ऑन टाइम फूड टेगा तो उसे हर टाइम में हमें हमें ऐसा अच्छा सा अपिटाइट हो जाएगा. अपिटाइट हो जाएगा बोलेगा तो ऐसा दैट इज कमिंग फ्रॉम आवर ब्रेन, दैट सिग्नल्स आर कमिंग. वंस द सिग्नल्स आर स्टार्टिंग टू कम, उसमें उसके वजह से हमारा ऐसा पेट में ऐसा एसिड वगैरह आने का शुरू हो जाएगा. And consume meal on time and avoid excess spicy and oily food. Every time you should be very much carefully, not only in the summer season, excess spicy and oil food to be avoided. That will be take care your digestive function. If the digestive function is clear, so all season कौन सा भी season होने दो, आपको कुछ problem नहीं रहेगा. And foods and habit to avoid during summer. Food to limit. What are the food we want to taken on limit? Deep fried food. That is, if you can avoid, that is more good. Excess red chili and spicy foods, and fermented and stale food, and excess pickles and salty snacks. Salty snacks and all to be avoided, because if you are taking salty again and again, the dehydration things and all can be happen. And bakery products, that is with the bakery products, what is the bad thing, which is that to baking, they are using some of the baking soda and puffing like the etc. So many additives and all it is used. So avoid most of the bakery products. And excessive non-vegetarian food also to be avoided. And carbonated soft drinks. That is very, very important. Carbonated soft drinks, that will be affect our digestive system as well as the metabolism. That will leads to many type of diseases also. And some of the habits also to be avoided for during the summer. That is skipping of meals. That should not be happen.
because anashanam means it that also create more problem in our digestive function. So we want to take little food, sometimes fruits or juices or something and all you want to take it. And sleeping late at night, रात को रात्रि जागरणम रूक्षम, ऐसा आयुर्वेद में ऐसा बोला है। रात्रि जागरण करता है वो रूक्ष करता है। और उसमें क्या है, रात्रि कभी ऐसा हम फॉर स्लीपिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्लीप, दैट मीन्स फर्स्ट याम के बाद, दैट इज आफ्टर 3 hours ऑफ सनसेट, definitely our that biological clock will be shutting down, start to shutting down. So immediately we want to go for sleep. So after 3 hours of our within the 3 hours of time, that up to 3 hours of time it is not a problem. After 3 hours of time of sunset, sunset के बाद तीन तीन घंटे के बाद कैसे भी हम सोने का है। और एक्सेसिव सन एक्सपोजर, दैट सन में डायरेक्ट सन में जाने का वो सब ऐसा हम अवॉइड करना है। और ओवर एक्सर्शन एंड स्ट्रेस, ओवर एक्सर्शन स्ट्रेस वगैरह नहीं करने का है। उसी इसी टाइम का वो क्या है, नॉर्मली वी आर हीट जनरेटर है, अंदर से ही बाहर से भी ऐसा हीट है। और ओवर एक्सर्शन करना है, ज़्यादा स्ट्रेस लेगा वो, उसके वजह से भी हीट ज़्यादा बढ़ेगा। और एक्सेस स्क्रीन टाइम, because that more heat and all it is there, more heat is there, our body is also heat. So continuous use of this phone, laptops, etc., that also create more problem. And smoking and alcohol consumption is to be avoided in all seasons, especially the summer seasons. And ideal summer meal plan is that early morning warm water or coriander infused water you can take, that is more good. And soaked raisins or dates and all can be taken in the morning. And in the breakfast you can add some fresh fruits. You can take idli, poha or porridge, herbal drink or buttermilk in the morning time. And mid-morning coconut water or fruit juice is very good for to improve your to reduce your dehydration and weakness. And lunch you can take rice or chapati, dal, seasonal vegetables, curd or buttermilk, and salads. Some of the salads that if you are taking salads, raw salads can be avoided. You can add that, make the salad in a steamed salads and all. If you can add, that is more good. And evening herbal tea or fresh fruit, roasted snacks in moderation also you can take. And dinner, light khichdi or soup, steamed vegetables, early dinner is preferred. And important tip is eat freshly prepared meals and avoid reheated food whenever possible. So खाना ऐसा बना के हमारा इसमें ऐसा फ्रिज में रख के वो बार बार ऐसा यूज करने का वो आदत रहेगा तो वो ऐसा छोड़ना है। दैट इज नॉट गुड फॉर एनी सीजन, वो समर सीजन में नहीं है, कौन सा भी सीजन में अच्छा नहीं है। और ऐसा बाद में कुछ डिसीज वगैरह बनने का चांसेस है। और समर लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन में wake up early because that time it is little cold. That time minimum cold it will be there in the atmosphere. That is more good for the body to get fresh. And avoid direct afternoon sun exposure. Direct afternoon sun exposure you want to avoid it. And if it is that much it is needed, just wear light cotton clothes. And you can use if it is needed to go out and all, use light cotton clothes. Take adequate rest and maintain regular sleep patterns. Sleep patterns are very, very important because sleep also, if it is reduced the sleep, automatically that also create that dryness as well as the heat in the body. And practice meditation and relaxation to make calmness to the mind. Or practice of meditation and do some relaxation, some savasana type of things regularly, so that हमारा बॉडी में जो ये ज़्यादा ऐसा गर्मी पड़ता है और माइंड में गर्मी पड़ता है, वो सब ऐसा ठीक होने के लिए वो सहायता करेंगे। और फिजिकल एक्टिविटीज में देखेगा तो लाइट योगा, यू वांट टू रिड्यूस ऑल योर एक्सरसाइज पैटर्न बिकॉज ऑलरेडी बॉडी इज दैट मच इज एक्सॉर्टेड। सो ऐसा हमारा एक्सरसाइज वगैरह करने का वो सब ऐसा अच्छा सा कम करने का, लाइट योगा वगैरह कर सकते हो, वॉकिंग नॉर्मल से वॉकिंग वगैरह कर सकते हो। वो पहले
हम एक 4-5 किलोमीटर ऐसा वॉकिंग करेगा तो 2 किलोमीटर में ज़्यादा सा ज़्यादा वो हो जाएगा। और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हो। और प्राणायामा कैन बी गुड, प्राणायामा टू बी यूज्ड, it is very good for to control the mind as well as the body also. And the yoga pranayama, some of the recommendations are shavasana to be followed, very effective for relaxation, body and mind relaxation के लिए shavasana practice करना है। और वज्रासना, ताड़ासना, भुजंगासना, बलासना and all that will be help for some of the stretchings. Our that spinal stretching, leg stretching, etc. will be get it by doing this asanas. And cooling pranayama techniques like Shitali pranayama, Shitkari pranayama, Anulom Vilom pranayama and all you can do. उसमें एक ये योगासना एंड प्राणायाम में अच्छा सा एक गुरु का शिक्षण से ही वो करने का है, नहीं तो ऐसा कुछ ये चेंज वगैरह हो जाएगा तो उसमें से वो बैड इफेक्ट भी होने का चांसेस ज़्यादा है। उसका वजह से कौन सा भी योगासना और प्राणायाम करेगा तो एक अच्छा पढ़ाई किया हुआ इंस्ट्रक्टर और अच्छा सा आचार्य से वो सिखा के वो करना है। और वंस यू आर डूइंग दैट योगा एंड प्राणायाम ऐसा वगैरह अच्छा सा करेगा तो मेंटल कामनेस हो जाएगा और बेटर ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू दैट व्हेन वी आर डूइंग दैट शीतली प्राणायाम वगैरह करेगा तो अच्छा सा ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में आ जाएगा, उसमें से स्ट्रेस रिडक्शन हो जाएगा एंड इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल वो भी ऐसा फील कर सकते हो। ऐसा प्राणायाम वगैरह सुबह सुबह करने का, अर्ली मॉर्निंग में करेगा तो एकदम अच्छा सा वो फीलिंग हमको मिल जाएगा। और समर स्किन केयर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्किन केयर ऑन समर सीजन बिकॉज ये पित्त ज़्यादा बढ़ने के वजह से पित्त नॉर्मली अफेक्ट द ब्लड एंड द स्किन। वंस द ब्लड इज गेटिंग अफेक्टेड द स्किन ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड। सो सनबर्न वगैरह होने का चांसेस है और रैशेस आने का चांसेस है, एक्ने आने का चांसेस है और एक्सेस स्वेटिंग वगैरह होने का चांसेस है एंड ड्राइनेस एंड टैन वगैरह आने का चांसेस ज़्यादा है। उसके वजह से यू शुड बी सभी लोग क्या करने का, ड्रिंक एडिक्वेट वाटर इन ए प्रॉपर इंटरवल्स इन ए प्रॉपर क्वांटिटी, लिटिल लिटिल वाटर इनटेक करके उसमें वो स्किन का हाइड्रेशन प्रॉपर में करने का तरीका फॉलो करना है। और यूज नेचुरल फेस पैक्स, some of the natural face packs we can use, that will be very cool like aloe vera face pack. It is not the prepared face packs because prepared face packs में क्या होता है उसमें ज़्यादा chemicals वगैरह ज़्यादा रहेगा। that use some of the don't use any type of chemical products during this season and apply sandalwood or aloe vera paste and all directly to your face or body and all, that will be cool your body. And consume antioxidant rich foods, that foods like that amla and all, that is a antioxidant food also, that type of vitamin C type of foods and all उसमें इंक्लूड करेगा तो स्किन केयर में वो काम करेगा। और इम्पोर्टेंट मेंटल वेलनेस ड्यूरिंग द समर सीजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्लाइमेट में भी ऐसा ज़्यादा ये इरिटेशन होता है, हमका बाहर नहीं जा सकते हैं, बहुत इरिटेशन के वजह से ऐसा मेंटल स्ट्रेस है वगैरह होने का चांसेस है। So common that mental stress symptoms are irritability, anger, restlessness, poor concentration, sleep disturbances. ये सब ऐसा पित्त ज़्यादा होने के वजह से हो जाएगा, बॉडी में पित्त होने के वजह से। तो वो सब ऐसा कम करने के लिए प्रैक्टिस मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करने का अच्छा है। और स्पेंड टाइम इन नेचर and that properly spend some of the time with the nature itself and listen to calming music and maintain proper sleep, that is very important, and avoid excessive workload and stress। ज़्यादा वर्क वगैरह नहीं करने का, थोड़ा रिलैक्स करके पूरा वर्क वगैरह ऐसा रिलैक्स में करना है। एंड before concluding, some of the things I want to give as some takeaways. Follow a seasonal Ayurvedic diet. Stay hydrated throughout the day. Eat light, fresh and cooling foods. Avoid excessive spicy and fried food. Practical yoga and pranayama.
protect digestion during summer, maintain proper sleep and relaxation, include herbs and natural remedies in our normal day-to-day life. So that Ayurveda's core message is the prevention is always better than the cure. So swasthasya samrakshanam, swastha samrakshanam, swasthya samrakshanam is the Ayurveda's first principle. Swasthasya swasthya samrakshanam adurasya roga prashamanam cha. That is the definition of Ayurveda. So swasthasya swasthya samrakshanam is one of the major things. So we should be follow that proper Ridu Charya. It is called as Ridu Charya. All the Ridus we want to be noticed, and according to that Ridu Charya we want to follow, because most of the people know that according to our lifestyle, our samskaras, our ancient people and our parents and grandparents and all, maybe maybe taught us that how to follow that diet on which season, like what type of diet. वो पहले वगैरह अच्छा सा ऐसा ये तरीका था। अभी अभी नया फूड पैटर्न वगैरह हो गया। अभी सब ऐसा ऐसा हमारा फिंगर टिप्स में सब ऐसा फूड हमारा डोर स्टेप में आ जाएगा, वैसा वैसा दैट प्रैक्टिस हम स्टार्ट करने के वजह से बहुत सारा डिसीज वगैरह होने का ये भी स्टार्ट हो गया। उसके वजह से we want to very much careful while that choose our food and regimen, and whether it is good for our good for our health condition. That is the main thing, because there is one quote is there. With that quote I will be concluding that you should not worry about that sweet in your blood. That means you should not worry about the sweet in your blood, but you should be worry about the spice in your tongue. That is very important, because spice in your tongue, that will be leads to the disease. That sugar which is in the blood, that can be get controlled once you are getting control with your food habits. So that is the quote I am submitting it to you on conclusion. So this is the thing about that Ayurvedic practice on this summer season. And for you can consult any time with Vaidyaratnam Govardhan Ayurveda Hospital for any type of Ayurvedic guidance, seasonal wellness consultation, and holistic healthcare solutions. And connect with Vaidyaratnam Govardhan Ayurveda Hospital. We are conducting a beat the heat programs, treatment programs also it is there. Some of the good treatment programs can be controlled with the pitta reduction, vada palliation वगैरह करने के लिए some of the treatments are good treatments are there. That treatments according to the conditions, body conditions, our health conditions के हिसाब से हम ऐसा प्लान करके इधर करता है। उसके वो भी इधर वैद्यरत्नम गोवर्धन आयुर्वेदा हॉस्पिटल में हो रहे। By this I just make thank you to all who given the this platform to explain what Ayurveda's view on this summer and summer habits. Okay, thank you. Hare Krishna. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आई थिंक मेरा हिंदी वगैरह उतना अच्छा नहीं था तो भी हरे थोड़ा थोड़ा कृष्णा। ऐसा सबको भी ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा ये मिला ऐसा लगता है। हरे कृष्णा, नान्यानी शरबत को पी सकते हैं ना? हाँ, नन्नारी शरबत इट इज पी सकते हैं, इट इज गुड। आनंदमूल that it is Shariva നന്നാരി. അതിനാണ് സാരിവ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ അതെ, that is called as Shariva. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। Yes, प्रभु प्रणाम. जी 1 महीने पहले मेरा गॉल ब्लैडर निकाला गया भक्ति वेदांत में, पर प्रभु जी मुझे थोड़े थोड़े समय पे 1-1 घंटे में मुझे ना भूख लगती है। तो ये कारण क्या हो सकता है? क्योंकि फिर वजन बढ़ने के भी चांसेस होते हैं ना प्रभु जी। तो काफी वेट कम हो गया था, पर अब कैसे होता है कि मुझे राइस ऐसा लगता है कि मैं राइस ही खाऊं।
तो सुबह तो मैं फ्रूट लेती हूँ जैसे डॉक्टर ने कहा है। पहले तो उन्होंने मुझे एकदम पानी जैसा लिक्विड पे रखा था 3 दिन। फिर उसके बाद 3 दिन उन्होंने मुझे बोला था एकदम लाइट ही जैसे कि लिक्विड ही लेना है। ओके फिर प्रभु जी अब भी है ना, मुझे जो भूख बढ़ी है ना, वो कंट्रोल नहीं होता है। मैं काफी कोशिश करती हूँ कि पर फ्रूट से मेरा पेट नहीं भरता है प्रभु जी। और थोड़ा भी मैं राइस खा लूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे क्या खाना चाहिए प्रभु जी, थोड़ा मुझे आप राय दीजिए। नहीं, आपका ये प्रॉब्लम ये क्या है, बॉडी में ज्यादा पित्त ज्यादा बढ़ा है। बिकॉज दैट हम्म। दैट बाइल विच इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द लिवर ना, वो लिवर ऐसा ये गॉल ब्लैडर में ऐसा ये दैट रिजर्वायर करके उधर रखा है। वो ज्यादा ऐसा खाना लेगा तो रिजर्वायर से हमें वो देता है। अभी क्या है, वो निकालने के बाद वो क्या है, उधर ऐसा दैट रिजर्वायर करके रखने के लिए जगह नहीं ना। उसके वजह से वो एसिड बढ़ता है ज्यादा, बॉडी में एसिड बढ़ता है। उसके वजह से आपको ज्यादा भूख लगता है। वो एसिड कम करने के लिए ऐसा कुछ ट्रीटमेंट वगैरह लेना है, कुछ दवा वगैरह है आपका कंडीशन वगैरह ऐसा, अच्छा सा कंसल्ट करके दवा लेगा तो वो कम हो जाएगा। तो मुझे किससे कंसल्ट करना चाहिए प्रभु जी भक्ति वेदांत में? ऐसे तो वैष्णव सेवा प्रभु ना, हाँ वैष्णव सेवा प्रभु ने किया है जो भी है हाँ। मेरा ऑपरेशन वगैरह। तो मुझे और किससे कंसल्ट करना है, कुछ राय देंगे प्रभु जी? आपको सीधा उधर हमारा भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में भी हमारा आयुर्वेदिक विंग है, उधर कंसल्ट कर सकते हैं। तो नहीं है तो इधर गोवर्धन एको विलेज में आपको ऐसा एक ये अपॉइंटमेंट लेके ऐसा कंसल्ट कर सकते हो। इधर आ सकते हो, नहीं तो आपको ऐसा ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है प्रभु जी, मैं जरूर करूंगी। ओके। हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी वजन कम करने के लिए कुछ है? वजन वजन कम करने के लिए, वजन ज्यादा हो गया तो कम करने के लिए कुछ बॉडी डिटॉक्स करना पड़ेगा फर्स्ट। want to undergo the body detox first clearly. आफ्टर दैट वो खाना वगैरह अच्छा सा डाइट वगैरह बोलेगा तो ऐसा नॉर्मल में हमारा ये हेरिडिटरी में उतना वजन नहीं है तो कम होने का चांसेस है। हेरिडिटरी में वजन रहेगा तो उतना ज्यादा कम नहीं हो जाएगा। 75 केजी है। हाँ। नहीं नहीं, हमारा ऐसा हेरिडिटरी में ऐसा हमारा फादर मदर वगैरह उन लोगों को ऐसा वेट रहेगा तो हमें वेट हो, नेचुरली वी विल बी हैव ए वेट, बॉडी वेट, that और normal weight it will be there. But if it is more, that we can control with by doing a detox. Once we are doing the detox and continue some of the home that home remedy detox also it is there, that if we are following automatically that will control within a 1 or 2 years slowly कम करने का। नहीं तो ऐसा जल्दी ऐसा कम हो जाएगा तो और वजन ज्यादा जल्दी से बढ़ेगा। शाम को तो सलाद और सूप ही खाती हूँ, हाँ। फिर भी ये नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा शाम को सलाद वगैरह लेके सूप मजा करके खाली वो ऐसा करेगा तो ऐसा नहीं हो सकता है। दैट इज वाई दैट बॉडी डिटॉक्स करना चाहिए। पहला डिटॉक्स करेगा तो बॉडी में जो ऐसा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है वो ठीक हो जाएगा। वंस द मेटाबॉलिज्म ठीक होने के बाद हम ऐसा डाइट करेगा तो डाइट में काम करेगा। എനിക്ക് 72 വയസ്സായി, അതനുസരിച്ചിട്ട് ആവുമ്പോ കൂടുതലല്ലേ, വെയിറ്റ് കൂടുതലല്ലേ പ്രഭുജി? Weight, age and weight, it is not having any connection. Normally, a height and weight, it is having the connection. So, you just do വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുണ്ടോ? കണ്ടീഷൻ യു ആർ ഹാവിങ് എനി അതർ ഡിസീസ്? എന്താണ് BP ഉണ്ട്. Yeah, so you want to do properly detox so that BP also it will be controlled correctly. പിന്നെ You just plan for a detox, proper detox. You can come over here, you just stay with us. You can do a proper detox so that that will take care your entire these problems, everything. BP also and the weight also. ഈ 2 നേരം കഴിക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് BP-യുടെ. Okay. പിന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്, അരമണിക്കൂർ നടക്കും വൈകിട്ട്, അത്ര തന്നെ. Okay. Walking and all, it is good. Exercise is very good. Okay. Okay.
Any more questions? Okay, we would like to thank Dr. Anand ji for sharing such informative knowledge about heat in this summer. So let's traditionally thank him by loudly chanting 3 times. Hari Bol, Hari Hari Bol. Bol. Thank Very you, well. Dr. Anand ji. It was great to have you and information which you shared with us. Thank you very much. We really appreciate your information and all kind of knowledge which you gave us. Thank you. With this, Thank we you. like to end the session today. Thank you very much. Okay. Hare Krishna. Thank you. धन्यवाद डॉक्टर साहब. Thank you, Dr. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna Prabhuji. I'm leaving. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha prabha sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Guru Vaishnava Vrinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Oh, Premanand Hari. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.